Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki dan di sini saya bersama 5 teman saya. Nama saya Royhan Primadagna. Nama saya Zikra Garsali. Nama saya Sita Ardianti Pribadi. Nama saya Nafira Syifa Purwadinata. Nama saya Abidja Kurniawan. Kita dari kelompok 4 yang bertemakan pengujian material hardness test. Langsung saja ke materinya. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengujian material. Pengujian material adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dan karakteristik material, seperti kekuatan dan kekerasan. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah material tersebut sesuai dengan kebutuhan dan standar industri yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengujian kekerasan atau hardness test. Uji kekerasan adalah pengujian yang paling efektif untuk menguji kekerasan dari suatu material. Karena dengan pengujian ini kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanis suatu material, meskipun pengukuran hanya dilakukan pada suatu titik atau daerah tertentu saja. Nilai kekerasan cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Dengan melakukan uji kekerasan, material logam khususnya dapat dengan mudah digolongkan sebagai material bulat atau detas. Mikrostruktur jenis material melalui analisa metodologi dan lainnya. Selanjutnya, jenis metode pengujian itu ada 4. Metode yang pertama itu kekerasan Bresnel, yang kedua ada Vickers, yang ketiga ada kekerasan Rockwell, dan yang terakhir adalah micro hardness atau KNOV. Pengujian Bresnel merupakan jenis hardness test dengan cara menusuk ataupun menekan spesimen menggunakan intender berbentuk bola yang terbuat dari baja yang mudah dikeraskan atau carbide tungsten. Intender bola baja digunakan untuk material yang memiliki kekerasan Bresnel hingga 450 BPM. Selanjutnya yaitu metode Bresnel. Indentor bola karbida tungsten harus digunakan apabila material yang diuji memiliki kekerasan Bresnel antara 451 sampai 650 BAN. Pengujian yang standar dilakukan dengan menggunakan diameter 10 mm, bola baja atau karbida tungsten dengan beban 3000 kg untuk logam keras, beban 1500 kg untuk logam pertengahan, dan beban 500 kg serta lebih rendah untuk material lunak. Selanjutnya metode Bresnel. Penulisan nilai hardness Bresnel harus diikuti dengan simbol HBW atau HBS. Dan jika diameter indenter dan beban yang digunakan tidak standar, maka harus diikuti oleh kondisi pengujian yang meliputi diameter indenter yang digunakan, beban, dan dwell time jika waktu yang digunakan saat pembebanan di luar 10-15 detik. Lanjut ke contoh metode Bresnel. 220 HBW artinya nilai hardness Bresnel 220 dengan indenter 10 mm, beban 3000 kg, dwell time 10-15 detik. 350 HBW 5 atau 750 artinya nilai hardness Bresnel 350 dengan indenter 5 mm, beban 750 kg, dwell time 10-15 detik. Bresnel, keterbatasan uji Bresnel. Untuk mengukur material yang sangat keras, indentor bola dapat mengalami deformasi yang berlebihan. Mengukur kekerasan spesimen tipis, indentasi dapat lebih besar daripada tebal spesimen. Digunakan untuk mengukur material yang dikeraskan permukaannya. Indentasi dapat menusuk lebih dalam daripada tebal permukaan yang dikeraskan, sehingga pengukuran menjadi tidak valid sebab mengakibatkan pengukuran bagian dalam yang lunak juga. Pengujian kekerasan material dilakukan dengan cara menekan material atau spesimen uji dengan indentor intan dengan bentuk piramida dengan alas segi 4 dan besar sudut dari permukaan yang berhadapan 136 derajat. Penekanan dengan indentor akan menghasilkan suatu jejak atau lekukan pada permukaan material uji. Untuk mengetahui nilai dari kekerasan material uji, maka diagonal rata-rata dari jejak tersebut harus diulur terlebih dahulu dengan memakai mikroskop. Angka kekerasan Vickers didapatkan dengan membagi besar beban uji yang akan digunakan dengan luas permukaan jejak. Jika D adalah diagonal rata-rata dari jejak,
maka luas permukaan jejak dapat ditentukan sebagai berikut. Rentang beban uji yang dipakai pada pengujian kekerasan Vickers berkisar 1 kg sampai 120 kg. Dan beban uji yang umum dipakai adalah 5, 10, 30, dan 50 kg. Sedangkan waktu penerapan beban uji di dwell time standarnya dilakukan antara 10 hingga 15 detik. Di dalam pengujian dengan metode Vickers ini perlu diperhatikan mengenai jarak minimal dari tempat titik pusat jejak ke sisi pinggir material, di mana menurut ASTM adalah sebesar 2,5 kali diagonal jejak dan jarak minimal antara jejak-jejak yang berdekatan juga 2,5 diameter untuk baja dan paduan tembaga, dan 3D untuk logam yang ringan. Sementara untuk jarak minimal antara jejak adalah 3D untuk baja dan paduan tembaga, serta 6D untuk semua logam ringan. Pengujian kekerasan Rockwell merupakan salah satu pengujian kekerasan yang mulai banyak digunakan. Hal ini dikarenakan pengujian kekerasan Rockwell yang sederhana, cepat, tidak memerlukan mikroskop untuk mengukur jejak, dan relatif tidak merusak. Pengujian kekerasan Rockwell dilaksanakan dengan cara menekan permukaan spesimen atau benda uji dengan suatu indentor. Penekanan indentor ke dalam benda uji dilakukan dengan menerapkan beban pendahulu atau beban minor, kemudian ditambahkan dengan beban utama atau beban mayor. Lalu beban utama dilepaskan, sedangkan beban minor masih dipertahankan. Saya akan menjelaskan metode Rockwell. Cara Rockwell ini berdasarkan pada penekanan sebuah indentor dengan suatu gaya tekan tertentu, permukaan yang rata dan bersih dari suatu logam yang diuji kekerasannya. Setelah gaya tekan dikembalikan ke gaya minor, maka yang akan dijadikan dasar perhitungan untuk nilai kekerasan Rockwell bukanlah hasil pengukuran diameter atau diagonal bekas lekukan, tetapi justru dalamnya bekas lekukan yang terjadi itu. Inilah perbedaan metode Rockwell dibandingkan dengan metode pengujian kekerasan lainnya. Pengujian Rockwell yang umumnya dipakai ada 3 jenis, yaitu HRA, HRB, dan juga HRC. HR itu sendiri merupakan suatu singkatan kekerasan Rockwell atau Rockwell Hardness Number, dan kadang-kadang disingkat dengan huruf R saja. Selanjutnya ada metode micro hardness, yaitu pengujian kekerasan mikro merupakan teknik khususnya yang digunakan untuk mengevaluasi kekerasan material pada sampet mikroskopis atau tipis berbentuk kompleks, fase individual material, serta lapisan atau perlapisan permukaan dengan menggunakan probe fisik yang disebut indenter. Pengujian mikro kekerasan menilai bagaimana bahan merespon bahan yang diberikan hingga 100.000 gram atau 10 N. Uji mikro kekerasan juga merupakan metode yang efektif untuk mengidentifikasikan kedalaman lapisan yang dikeraskan di dekarburisasi atau karburisasi, green burn, dan kontaminasi permukaan. Selanjutnya ada metode micro hardness. Dengan menggunakan metode ini, teknisi, peneliti, dan juga profesional pengendalian mutu dapat memperoleh wawasan penting tentang sifat mekanis berbagai material, termasuk logam, besi, non-logam, pelapis keramik, kaca, batu akrilik, dan masih banyak lagi. The Brinell Hardness Test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be measured. First of all, the tester has to make himself familiar with the testing machine. A monitor and the control panel are positioned in the upper part of the machine. These are used to select and program different testing methods. Below the control panel, a microscope lens with a digital camera and an indenter are installed. These two elements are connected to each other and rotate towards the test piece as required. It is also possible to select and exchange the indenter, so different methods of hardness testing can be conducted on the same testing machine. The support table can be adjusted in height, so the test piece can be positioned at the correct distance to the microscope lens and the indenter. After becoming familiar with the machine, let's start the experiment.
The principle of the Brinell hardness test is to press a hard spherical indenter with an exactly defined force onto the test piece, then evaluate the surface area of the indentation. The tester selects a suitable spherical indenter and inserts it into the holding device of the testing machine. Next, he puts the turbocharger housing onto the support table, rotates the microscope lens into vertical position and adjusts the correct height of the test piece. After bringing the test piece surface into focus, he selects the exact spot where the hardness test is to be made. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again and the microscope lens pans back to its former position. The indentation can now clearly be seen on the monitor. With the control knob, the tester places 4 measuring lines on the edges of the indentation to measure its diameter. That's it! The testing machine can now calculate the Brinell hardness. The hardness value is defined as test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The result is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 250. The Vickers hardness test. The hardness of a compressor wheel for a turbocharger is to be measured using the Vickers method. The main principle of this hardness testing method is to press a pyramid-shaped diamond indenter with an exactly defined force onto the test piece and then to evaluate the surface area of the indentation. First, the tester has to prepare his testing machine. He takes the Vickers indenter with the 4-sided pyramid and inserts it into the mounting device of the testing machine. He then places the compressor wheel on the support table and rotates the microscope lens into its working position. With a hand wheel, he adjusts the height of the support table until the test piece surface is displayed in focus on the screen. Next, he moves the test piece around on the support table until the right spot for the hardness test is displayed. Now that everything has been prepared, let's begin with the test. After pushing the start button, the diamond pyramid pans down and carefully touches the test piece surface. The test force slowly increases to its specified value. After holding the test force constant for a certain time, the indenter lifts again, pans back, and the microscope lens resumes its former position. This is the magnified indentation on the display screen. With the control knob, the tester now places 4 measuring lines at the corners of the indentation. Doing that, he can easily measure the length of the 2 diagonals. Finally, he only has to push the input key. The Vickers hardness value will then be calculated automatically. It is equal to the test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The Vickers hardness of our compressor wheel is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 125. The Rockwell hardness test, scale C. In this video, we will show how the Rockwell hardness test works using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation of a hard indenter under a test force. In the process variant scale C, a rounded cone made of diamond is used as an indenter.
In step 1, the diamond cone is pressed onto the test piece surface with a minor force of 10 kilopons. The depth of indentation under this preliminary load is the reference point. In step 2, the test force is increased by 140 kilopons, which is acting as the major force. This means that an overall force of 150 kilopons is now acting on the indenter, and this force is held for a certain time. In step 3, the major force is removed again. While the minor force is still acting, the permanent increase in depth of indentation E is measured. This is how the Rockwell hardness is calculated. Rockwell hardness HRC is equal to 0.2 minus permanent depth of indentation E in millimeters times 500. Let's take a look at how the test is carried out in practice. The tester selects the conical diamond indenter and installs it in the testing machine. Then he picks up the gear wheel and puts it on the support table. After rotating the microscope lens to its vertical position, he can adjust his test piece. As soon as a focused image can be seen on the screen, the surface of the test piece is in the correct height. The test can start. In modern testing machines, the Rockwell hardness test is fully automated. That's why the Rockwell hardness test is used so often in automated production lines. That's it. The Rockwell hardness of our gear wheel is 55 HRC. This result is displayed on the screen. लूप हार्डनेस सिस्टम है और यहाँ पे हम अभी इस मशीन में टेस्टिंग कैसे होता है ये देखने जा रहे हैं। इस मशीन में आप देखोगे यहाँ पे एक आईपीस लगा हुआ है जहाँ पे आप हार्डनेस का जो इम्प्रेशन बनता है लूप हार्डनेस स्केल में उसको आप यहाँ से देख के उसको मेजर कर सकते हैं इस आईपीस के ज़रिए। और यहाँ पे ये ऑप्टिकल इनकोडर है जिसमें हम ये बटन के ज़रिए जो भी मेजरमेंट हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हार्डनेस शो करेगा। और इस मशीन में जो टेस्ट लोड्स होते हैं वो 10 ग्राम से लेके 1 kg तक के होते हैं जो यहाँ से हम इसको रोटेट करके सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टरेट है इस मशीन का ये ऑटोमेटिक टरेट है। इस बटन के ज़रिए आप इसको रोटेट करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है मशीन में, जो कैमरे से हम उस सॉफ्टवेयर में इमेज को लेते हैं और यहाँ पर उसको मेजर करते हैं। अभी जो हमने सैंपल का इम्प्रेशन मेजर किया है उसका हार्डनेस वैल्यू 433 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और ये लोड है 200 ग्राम का। तो अभी हम एक रीडिंग लेते हैं, इस इमेज को हम लाइव कर लेते हैं दोबारा और यहाँ पे एक नई जगह पे हम एक इम्प्रेशन जनरेट करेंगे। यहाँ पर हमने लोड जो है 200 ग्राम लिया है और आईपीस में भी आप सरफेस एरिया देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको सिंपली ये स्टार्ट का बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर इंडेंटर स्विच होता है और वो अभी इम्प्रेशन जनरेट कर रहा है। यहाँ पर आप ड्वेल टाइम देख सकते हो, 10 सेकंड्स का ड्वेल टाइम रखा था वो अभी उसका काउंटडाउन शुरू हुआ है। और जैसे ये 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे वो दोबारा अनलोड होगा और अपनी होम पोजीशन पे जाएगा। और अभी आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे जो इमेज है इसको इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम यहाँ से मेजरमेंट के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मेजरमेंट ऑटोमेटिक मेजरमेंट हुआ है, लेकिन इसकी एजेस जो है अभी भी ठीक से मेजर नहीं हुई है तो थोड़ा सा हम उसको मैन्युअली शिफ्ट करके मेजर कर लेंगे। तो ये 437 दिखा रहा है। इसमें जो टॉलरेंसेस है वो ±3% ऑफ हार्डनेस वैल्यू है। तो 433 का जो हार्डनेस वैल्यू है उसके 3% हम उसका जो परमिसिबल लिमिट्स है उसमें हम उसको मेजर कर सकते हैं। और यहाँ से रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट होता है, जो इमेजेस हमने कैप्चर की है उसके मेजरमेंट के साथ में वो इमेजेस भी सेव होती है।
और इसमें प्रिंटर भी लगा हुआ है। आपको अगर प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट बटन दबा के प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके से मशीन काम करता है। जो इम्प्रेशन है लूप हार्डनेस स्केल में ये रोमबस बनता है इस तरह से, और इसी में अगर माइक्रो विकर्स का हम इंडेंटर लगाते हैं तो स्क्वायर इम्प्रेशन बनेगा। जो पिरामिड शेप का इंडेंटर होता है वो स्क्वायर इम्प्रेशन जनरेट करता है, और हम उसको विकर्स हार्डनेस स्केल सिलेक्शन करके उसमें भी मेजर कर सकते हैं। और इसका ये एक्सेसरी बॉक्स है, जो इसके साथ में जो चीज़ें दी जाती है वो इसी बॉक्स में आपको दी जाएगी। थैंक यू।